वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इन्फॉर्मेटिव क्लास। स्वागत है मित्रों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, डिफरेंस बिटवीन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड and like and share also. Good morning friends, welcome to my YouTube channel online informative class. I am going to start today class Python language tutorial. This tutorial is beneficial for the CBSE computer science students and beginners of the Python language. I am from online informative class TV. My dear students, this tutorial is beneficial for all who want to a series of videos of Python language and they want to learn from online video. So I am going to present it in front of you. As you know very well, Python is a very good and easy language for the beginners, and I am providing you a lot of video here, sequence of videos here. So today in the sequence of Python tutorial video, I am going to tell you the difference between keyword and identifier. First of all, what is keyword? Keyword is a special word that has a special meaning and purpose. कीवर्ड एक स्पेशल वर्ड होते हैं, इनके स्पेशल मीनिंग होते हैं और उनका स्पेशल पर्पज होता है। कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं। कीवर्ड्स आर फ्यू इन काउंटिंग। कीवर्ड्स की संख्या गिनी चुनी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, प्रिंट, इफ, व्हाइल। इसके अलावा अगर आपको और कीवर्ड्स की नॉलेज चाहिए तो इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ आप कीवर्ड वाले ट्यूटोरियल को चेक कर लीजिएगा। प्लीज़ चेक द कीवर्ड ट्यूटोरियल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर इज द यूजर डिफाइंड नेम गिवन टू अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम लाइक वेरिएबल एंड फंक्शन। आइडेंटिफायर कुछ नहीं है, ये क्या है, ये यूजर के बनाए हुए कुछ नाम है, कुछ वेरिएबल के नाम, फंक्शन के नाम, इसके अलावा और भी होते हैं क्लासेस के नाम। ठीक है। आइडेंटिफायर्स आर नॉट रिजर्व वर्ड। जैसे कि कीवर्ड्स आपके रिजर्व वर्ड थे, आइडेंटिफायर्स आपके रिजर्व वर्ड नहीं है। इट कैन हैव लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अब कीवर्ड आइडेंटिफायर में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं? लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट यूज कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अंडरस्कोर नेम, comma role, comma address. If you want to know more about identifier, then please the description box. You will get a link there for my video tutorial related to the identifier. So my dear students, my dear friends, thanks for watching this video. Please like and share this video and subscribe my channel also. Online informative class TV. Thank you.